Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. I am Miss Ibadat and I am your math teacher, and I warmly welcome you into my math classroom. Hopefully you have lots of fun in your previous lesson, and this lesson will going to be the same. And which things we're going to discuss in this lesson today, I'm going to tell you, but before that, let me give few instructions to the teacher who are watching this for educational purposes. Identify and write correct numeral to represent the number 0 from 50. And which skills we're going to talk about today? We're going to talk about your writing skills. So let's start the lesson with the recap. हमने क्या किया था previous lesson में? Playgroups, we had learned the formation of number 2 and we counted the body parts. ठीक है, ट्रेसिंग भी की थी और उसके बाद हमने स्कैवेंजर हंट भी किया था नंबर 2 को लेके. हमने प्लेडो के साथ नंबर 2 भी बनाया था और रेलवे ट्रैक वाली फॉर्मेशन भी सीखी थी नंबर 2 की. एंड आई सजेस्टेड योर टीचर कि अगर वो चाहें तो वो भी क्लास में रेलवे ट्रैक्स टॉय रेलवे ट्रैक्स प्रोवाइड करके एक्टिविटी करवा सकती हैं. ठीक है. नाउ आई वांट यू टू पॉज योर वीडियो हियर एंड ओपन दिस पेज ऑन योर बुक. Okay, playgroup. Hopefully you have successfully opened this page on the book. और हमने करना क्या है? We're going to count the picture and trace the number. ठीक है. जल्दी से इसके ऊपर जो पिक्चर बनी हुई है, क्या बनी हुई है? आईज बनी हुई है. कितनी आईज बनी हुई है? काउंट करें जल्दी से पिक्चर. 1 and 2. How many eyes are given? 2 eyes are given. अपनी आईज को काउंट करें जल्दी से. How many eyes are given? 1 and 2. How many eyes are given? 2 eyes. और हम कौन से लेसन में हैं? हम नंबर 2 के लेसन में. नाउ आई वॉन्ट यू टू ट्रेस नंबर 2 इन द एयर लाइक दिस. नंबर 2 क्या है? वी मेक अ कर्व, वी कम डाउन स्लैंट एंड वी गो बैक स्ट्रेट. दिस इज हाउ वी मेक नंबर 2. सो लेट्स नाउ एक्टिविटी टाइम है. हमने क्या करना है? लुक एट योर पीयर, काउंट हिज और हर बॉडी पार्ट एंड टेल हिम अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 2 eyes, you have 1 nose. हमारे पास एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है? अपनी टीचर डियर टीचर, आप अपने स्टूडेंट्स को पेयर में डिवाइड कर दें. ये एक दूसरे की तरफ देखेंगे एंड दे गोइंग टू टेल ईच अदर द अमाउंट ऑफ बॉडी पार्ट्स दे हैव, एज द एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू ऑलरेडी. नाउ पॉज योर वीडियो हियर. ओके प्ले ग्रुप्स, होपफुली यू हैव एंजॉयड द एक्टिविटी जिसके अंदर आपने एक दूसरे को बताया है कि कितने बॉडी पार्ट्स हैं. 1 हेड है, 1 नोज है, 1 चिन है, 2 आईज हैं, 1 नेक है, 1 शोल्डर है, 2 हैंड्स हैं, 2 नीज हैं एंड 2 टोज हैं, एज पर वी हैव लर्न इन द पोइम. सो नाउ व्हाट डू वी हैव हियर? इट्स अ प्री राइटिंग एक्टिविटी जिसके अंदर हम सॉल्ट ट्रे के ऊपर ट्रेसिंग करते हैं. नाउ आई वॉन्ट योर टीचर टू गिव यू सॉल्ट ट्रे एंड पॉज द वीडियो हियर. Give your children the salt tray. Okay, playgroups. Hopefully your teacher have given you the salt tray because I am having the salt tray here and on this I am going to help you कि हमने कैसे number 2 को trace करना है. देखिए मुझे और उसके बाद आपने बनाना है. We make a curve, we come down slant and we go back straight. This is how we make number 2. ठीक है. दिस इज हाउ वी मेक नंबर 2. अब दोबारा से एक बार कर लेते हैं. वी कम डाउन स्लांट, वी गो बैक स्ट्रेट लाइक दिस. ठीक है. मैंने एक और बार नंबर 2 बनाया है यहाँ पे. नाउ पॉज योर वीडियो हेयर एंड मेक नंबर 2. सबने अपना अपना नंबर 2 बनाना है प्ले ग्रुप्स. नाउ आई एम वेटिंग फॉर यू टू फिनिश योर एक्टिविटी एंड कम बैक टू द स्क्रीन. ओके प्ले ग्रुप, Hopefully you have successfully made number 2 on the salt tray. अगर आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बना तो कोई बात नहीं. जब भी आपको फारिग टाइम मिले तो आपने अपनी टीचर के पास बैठ जाना है या किसी भी पेयर से हेल्प लेके नंबर 2 की ट्रेसिंग करनी है सॉल्ट ट्रे पे. नाउ विद दैट आई वॉन्ट यू टू ओपन योर बुक एंड गेट अ क्रेयॉन. अपनी वीडियो को पॉज करें, अपना पेज ओपन करें और क्रेयॉन लें एंड देन वी गोइंग टू टेल यू व्हाट टू डू. प्ले ग्रुप्स, आपने उम्मीद है कि ये वाला पेज ओपन कर लिया है बुक के ऊपर एंड योर टीचर ऑल्सो हैव गिवन यू द क्रेयॉन. नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू ट्रेस नंबर 2 लाइक दिस. लुक एट द मूवमेंट ऑफ माई हैंड. आपकी बुक के ऊपर डॉट ऑलरेडी गिवन है. आपने क्या करना है? यहाँ पे डॉट लगाया
and we're going to go curve back, come down slant and go back straight like this. ठीक है, दोबारा से एक बार मैं आपको दिखाती हूँ. Make a curve, come down slant and go back straight. This is how we make number 2. अब आप लोगों ने एंड में हम ये वाली आइस के अंदर कलर करेंगे. आप बिफोर दैट let me show you how to make number 2. Make a curve, come down slant and go back straight. आपके पास उन्होंने arrows भी बनाए हुए number 2 के ऊपर. You can follow the arrows and make the formation of number 2. Make sure you don't go out of the tracing line. आपकी जीके की टीचर ने आपको बताया था how to stay on the line. This is how we make number 2. ठीक है? You can always take help from your teacher. Now pause your video here and quickly make number 2. Okay, playgroups, hopefully you have finished your work. Now what we're going to do, we're going to color into the eyes. ठीक है, हम आइस के अंदर कलर करेंगे. ये वाले पार्ट में इसकी. ठीक है, 2 eyes है हमारे पास. we're going to color into them like this. और आपने मेक श्योर करना है कि आपका कलर जो है वो आउटलाइन से बाहर ना जाए. मैं यहां पे कलर कर रही हूं स्क्रीन पे. टेक अ हिंट फ्रॉम हियर एंड डू द कलरिंग ऑन योर बुक. प्यारी सी कलरिंग करनी है, बिल्कुल भी आउटलाइन से बाहर ना आए. ठीक है, दिस इज हाउ वी गोइंग टू color the eyes. How many eyes are there? There are 2 eyes given on the screen. So this is how we have completed the lesson on the book. Pause your video here and quickly finish coloring your eyes. Okay, playgroups, hopefully you have finished your work by now. Now come to the screen and see which things we have done so far. In the first lesson, what we did, we counted 2 apples. क्या किया था हमने? 2 apples को काउंट किया था और हमने ड्रैगन फ्लाई भी बनाई थी. याद है आपको? आपने अपनी ड्रैगन फ्लाई रखी हुई है अपने पास. हमने क्या किया था? हमने 2 ड्रैगन फ्लाइज भी बनाई थी. और हमने कौन सी पोइम लर्न की थी? हमने हेड एंड शोल्डर बॉडी पार्ट्स वाली पोइम की थी. हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज. ठीक है, और फिर हमने क्या किया था? हमने काउंटिंग भी सीखी थी अप टिल 2. And then on the next day what we did, we learned the shape of number 2. उसकी हमने पोइम याद की थी और ग्रॉस मोटर एक्टिविटी में हमने प्लेडो से नंबर 2 भी बनाया था. And in the last day, today, what we did, we traced number 2 and we colored the eyes. So this is all about number 2. And now it is time for your homework, which is this part on your book. आपकी बुक के ऊपर ये वाला पार्ट भी गिवन है. ये वाला पार्ट आपने अपने टीचर या मामा के साथ बैठ के कंप्लीट करना है. ठीक है, यू गोइंग टू शो इट टू योर टीचर tomorrow. So with that, our lesson has come to an end. Hopefully you have enjoyed the journey of learning number 2. I'll grab you in the next lesson. Till then, Allah Hafiz.